लेकिन अब फोकस करते हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के जो नया फंड लॉन्च हुआ है NASDAQ 100 ETF इन्होंने लॉन्च किया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है कंपनी के CEO नितिन राकेश। मिस्टर राकेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक आइडिया दे सके, NASDAQ 100 ETF क्या इसके जरिए भारतीय निवेशक अमेरिकन मार्केट्स पे प्ले कर पाएंगे? क्या डिटेल्स हैं इस फंड के? बिल्कुल, the idea is to create a new asset class for Indian investors. So the ETF will track and invest in the NASDAQ 100 companies. Most shares NASDAQ 100 is the name of the ETF, and the idea was to bring some of the best global brand names like Apple, Google, Yahoo, Microsoft, Cisco, Oracle. I mean, all the names that are household names in India today. Bring them in to be, and make them available for Indian investors to invest in. लेकिन ये किस तरह से काम करेगा, क्योंकि अगर आप इन सारे शेयर्स को खरीदना चाहें NASDAQ पे तो आपको डॉलर चाहिए, और ये जो आपका इशू है वो तो भारत के बाजारों में है। बिल्कुल, ये रुपी डिनोमिनेटेड फंड है, सो इन्वेस्टर्स यहाँ पे हमको रुपीस देंगे, वो रुपीस हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करके अंडरलाइंग शेयर्स खरीदेंगे। तो इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो इन्वेस्टर विल हैव एक्सपोजर टू US dollar and the underlying shares in the index. So it's actually the returns will come from the movement of dollar versus the rupee, as well as the share price movement of the underlying stocks. Mr. Rakesh, I'm guessing कि basic purpose और टाइमिंग इस फंड का इस समय लॉन्च करने का अब यही है कि आप बेट करें कि यहाँ से आगे ग्लोबली और खासतौर से अमेरिकी मार्केट्स में काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिलेगी, और उसका एक पाए शायद फिर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के इन्वेस्टर्स को भी मिल पाएगा। I think luckily we are at a point where timing wise developed markets look like they're doing better. But from our point of view, it is not just about the timing, it is about creating a new asset class which has one of the best growth stories. आप पिछले 10 साल में देखें तो NASDAQ कंपनीज का जो अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ हुआ है वो 20% के ऊपर रहा है। In fact, Nifty or NASDAQ earnings growth in the last 10 years has been identical, but the valuation actually is lower than Nifty right now. So the idea is to be able to bring in a high growth asset class, which is available at a low valuation and has good earning potential for the next few years as well. And most importantly, जो correlation है NASDAQ 100 और Indian markets का वो बहुत low है. In fact, Nifty's correlation is the lowest with NASDAQ across all other developed markets indices, or even for that matter emerging market indices. So clearly, from our point of view, this is a high growth story being made available, which is at a low correlation to the Indian market, and hence asset allocation and diversification is the theme that we want investors to start playing. लेकिन क्या आगे आप डाउ जोन्स के स्टॉक्स के लिए भी ऐसी कोई स्कीम लाएंगे? Well, we are evaluating further schemes. This is the first international equity product that we are working with. So, based on the success and the experience with this product, we'll definitely, endeavor to bring in more schemes. लेकिन इक्विटी से बाहर क्या दूसरे एसेट्स पे भी आपकी नजर है, क्योंकि आप ETF पे ही पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, तो क्या गोल्ड, सिल्वर या दूसरे मेटल्स के लिए, कमोडिटीज के लिए कोई ETF लाएंगे? अगेन एकदम सही सवाल है आपका, क्योंकि हमने अभी 2 एसेट क्लास क्रिएट किए हैं, डोमेस्टिक इक्विटी एंड इंटरनेशनल इक्विटी. सो एज वी गो फॉरवर्ड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक एट अदर एसेट क्लासेस. वी हैव नॉट येट डिसाइडेड what the next sequencing will be. One has to also look at the regulatory environment, the other products in the market. So I think there are adequate number of gold ETFs already available. So I think we will look at something that is probably a little more differentiated and opens up a new segment for the clients. Like? Well, as I said, there is a whole market available on fixed income. There are other commodities outside of gold that are available. But again, as I said, within the regulatory environment, we have to find the best next set of products to work with. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और ये सारी जानकारी दी, और ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कामयाब होगा और काफी लोग NASDAQ पे नाम लगाएंगे।